So we discussed this numerical in the last lecture, where we find out these values of VL, VR, IZ, and PZ. And in the B part, we replace the load resistance with a different value, and then we try to calculate all these parameters. And we observed that in both these situations, the Zener diode was on in one of the states and off in another state. So we can say that the value of load resistance has a lot to do in deciding whether this Zener diode will be on or. So this is what we are going to study next, that we will try to solve some problems where the input voltage Vi, that will be fixed, and the variable RL, that load resistance, that will be variable. So the value of the load resistance is fluctuating, it's changing, increasing or decreasing. Now we will try to calculate the range of load resistance in which it can fluctuate so that our diode is on. The Zener diode is on. Okay, so for that we have used a load resistance here, which is variable in nature, and one fixed input voltage Vi right here. All right. So the very first thing is the same that the step one we discussed in last lecture also. Just open circuit the Zener diode and try to calculate the value of this V. So this V is equal to VRL in this case also. Right now we are not taking we are taking RL as a simple variable right here. Okay, so voltage drop across zero load resistance will be equal to IL times RL, and the value of IL we calculated in the previous slide. It was VI divided by RL plus R. So this is input voltage divided by R plus RL. That will give us the value of current IR and IL same, because IR and IL are same in this case. Okay, so this is the equation, first equation. Now we just simply replace the variables and we just simply rewrite this expression, taking out RL on one side. Okay, you just solve this equation, taking this VZ and writing the value of RL as RL minimum. So from that you will reach to this equation. ठीक है, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास मिनिमम लोड की वैल्यू ये आ जाएगी. So that means your value of load resistance should not fall below this value, otherwise the diode will be off. Okay, we have simply calculated the voltage across this load resistance and we have simply put this equal to VZ right here. So if your load resistance value is less than this particular value, in that case the VL, this value will also drop, and this is also equal to this V, this will also drop. So this equation will not be true any longer and your diode will be off. So your load resistance will have a minimum value which is equal to this. Any doubt till now, please ask. After that I will move forward. Sir, how did we get this R minimum value? Okay, उसके लिए हमने क्या किया, जो हमारी ये वाली इक्वेशन थी इसमें VL की जगह हमने VZ पुट किया and instead of RL we put VL minimum and then rearrange this equation. ठीक है, इसको इसलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, VZ RL plus VZ R इक्वल टू RL मिनिमम VI. फिर RL मिनिमम के फैक्टर्स हम एक तरफ ले जाएंगे, तो बाकी फैक्टर्स एक तरफ ले आएंगे, तो उसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगी. ठीक है, लेट मी ट्राई टू सोल्व इट हियर. ठीक है, अभी आपके हमारे पास है VZ
RL VZ into RL plus VZ into R is equal to R, एक्चुअल में इसको मुझे लिखना था RL मिनिमम, तो यहाँ पे भी आपका जो आएगा वो RL मिनिमम, RL मिनिमम इंटू VI। ठीक है, अब RL मिनिमम के फैक्टर एक तरफ ले लीजिए, तो उसमें आपका क्या आ जाएगा, एक यहाँ पर है VZ, ठीक है, माइनस VI इक्वल टू माइनस ऑफ VZ टाइम्स R। ठीक है, तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ RL मिनिमम इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस है, चलो अभी माइनस ही रख लेते हैं, माइनस VZ इंटू R डिवाइडेड बाई VZ माइनस VI। ठीक है, इसको रीराइट करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा R टाइम्स VZ डिवाइड बाई VI माइनस VZ। ओके, Yes, sir. ठीक है, so we have simply rearranged this equation and we get this equation to calculate the minimum load value. So if now you are given a problem in which it is asked that you have to calculate the minimum value of load resistance, then you can simply use this formula, or you can simply remember just one equation and just calculate the value of R. That will be the minimum value of the load resistance. Okay, now let's move to the next point. So the maximum current through the load resistance that will flow when the value of load resistance will be minimum. Okay, if we increase the value of load resistance, then the overall series resistance will also increase, and the value of current flowing through the load resistance will decrease. So the maximum value that will flow through the load resistance in this circuit, that will be decided by the minimum value of the load resistance, because we are not going below that value of load resistance. So that means that will be the maximum value of the current through the load resistance. So that's why we have taken this equation right here. So load current through the load, maximum value of current through the load will be simply equal to VL divided by RL, and we know that the VL is equal to VZ. That is the minimum requirement, and the minimum value of load resistance is RL minimum. So using this equation, we can simply calculate the value of current, maximum value of current that will flow through the load resistance, not through the Zener diode, but through the load resistance. Okay, now let's try to calculate the voltage across this resistance R. So this is input voltage. Now we have taken the drop across load resistance as VZ. So it is equal to VZ. In that case, voltage drop across the resistance will be VI minus VZ. Okay, now you have to remember that in all this process, we want to keep the Zener diode on. Okay, so our equivalent circuit in that case becomes something like this. उसमें हमारा यहाँ पे एक बैटरी हो रही है. And this is equal to V Z. लेकिन हमने डायोड को ऑन ही रखना है. So now if I want to keep the diode on, तो ये VZ के बराबर होना चाहिए. This will be on. Now we have replaced the diode with its equivalent.
Vi input is the total voltage that we were applying. Vr is the drop across the load resistance. So simply we can say that Vr, the drop across resistance, will be equal to Vi minus V से. यहाँ से आप VR की वैल्यू निकाल सकते हो. If you have calculated the value of VR, then you can also calculate the value of IR. So IR is equal to VR divided by R. Now you know the value of IR. Okay, now if this is our equivalent circuit, IR, IL, IZ. So IR is simply sum of these two currents. So current through Zener diode will be equal to total current through the resistor minus current through the load resistance. So वो equation हमने यहाँ पे लिख ली. Now we will use this equation to check something. Like what? Like the value of current through the diode, that is sometimes also given in this specifications of the Zener diode. That is the maximum value of load current, maximum value of current that the diode can withstand is this. और हम उसको जो है वो कैलकुलेट भी कर सकते हैं. कैसे? क्योंकि VZ हमको दिया हुआ होता है, ठीक है, और हमें एक चीज और दी होती है, वो होती है PZM, that is maximum value of the power that Zener diode can withstand. So we can simply divide this PZM with respect to VZ, and we will get the value of IZM, that is maximum value of current that diode can allow to pass through it. ठीक है, तो IZ हम हमारी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है, तो उसको अगर हम इसमें यहाँ पे रख देंगे मैक्सिमम वैल्यू को, तो लोड की फिर मिनिमम वैल्यू आ जाएगी. ओके, यहाँ पे आप मैक्सिमम मिनिमम का रिलेशन जो है उसको समझने की कोशिश कीजिए. करंट थ्रू द जेनर डायोड, that will be maximum this current when the load current will be minimum, because the sum of these two is constant, which is IR. So that is right here. We are subtracting something from it. So if we are putting this as maximum value, that means this is the minimum value of the current through the load. So with this relation, we will calculate the minimum value of current that can flow through the load resistance. The maximum value we already calculated right here. That was simply the ratio of Zener diode voltage divided by minimum value of load resistance, जो हमने first step में calculate किया. Minimum value, to find out the minimum value of the load current through the load resistance, you have to take into account the value of IZ, maximum value of Zener diode current, and that will be calculated from the equation this, and this will be given to you. Okay, now that we have calculated the minimum value of load resistance current, so the minimum current will flow through the load resistance. In that case, the value of resistance will be maximum. So this is what we will get next. The maximum value of load resistance, that will be Vz divided by minimum current through the resistance. So if your load resistance is within these range, RL minimum to RL maximum, only then the diode will be on and voltage across the load resistance will be equal to Vz. Only then the Zener diode will act as a voltage regulator. If it is below the RL minimum, then also your circuit will change. If it is above the RL maximum, then your circuit will also change, and your circuit will not, your output will not be equal to Vz. It will not be a regulated output. Okay, so these are the steps. We will start from the very first equation, which is finding out this one, जो कि हमने इस इक्वेशन से निकाली. उसके बाद हम सिंपली सी सर्किट को एनालाइज करते जाएंगे, करंट को सबट्रैक्ट करेंगे, वोल्टेज को सबट्रैक्ट करेंगे, एंड वी विल रीच टू दिस. तो आपको आर एल मिनिमम, आर एल मैक्सिमम, आई एल मिनिमम, आई एल मैक्सिमम, ये चीजें जो है वो उसके अंदर निकालनी होगी.
ठीक है, so I will erase all of this and we will try to solve a numerical on this, then we will have a better understanding of this. Okay, so this is the numerical that we have will solve. You are given this circuit, and for this particular network you have to determine the range of RL and IL that will result in VRL being maintained at 10 volt. इसने बोल दिया हमें रेगुलेट करना है अप टू 10 वोल्ट, ठीक है। VZ भी हमको दिया हुआ है 10 वोल्ट। तो इसको हमने अब सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए सबसे पहला तरीका वही, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ RL minimum. So if you remember that formula, then you can directly use it here. ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो आप सिंपली स्टार्ट कीजिए यहाँ पे V निकाल फाइंड आउट करने के लिए। Make this open circuit, consider this as V, and now calculate the write the equation for V. ठीक है, तो V हमारा क्या होता है, VRL के बराबर होगा। VRL होगा हमारा IL इंटू RL। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, IL हमारा होगा VI डिवाइड बाई IR प्लस RL। तो VI डिवाइड बाई R प्लस RL, और इंटू में हमारा पहले से था RL। ठीक है, नाउ to find out the minimum value, you simply put instead of V, VZ equal to VI. Now I am rearranging this, RL minimum divided by R plus RL minimum। ठीक है, अब यहाँ पे आपको VZ दिया हुआ है विच इज इक्वल टू 10 वोल्ट। ठीक है, हमें मेंटेन भी करना है VRL को 10 वोल्ट पे। देन VI दिया हुआ है 50 वोल्ट। RL minimum we have to find out, so I am simply putting it as a variable Y here, and R is given 1 kilo ohm, so 1000 plus 1. Now I simply solve it for Y and tell me what is the value. sir. 250 ohm. Yes. Okay, so Yes, RL sir. is our 250 ohm. This is the first thing that we have calculated. Now we will move on to the second one to calculate the RL maximum. But before doing that, we have to find out the minimum current through the load resistance. That is also asked here, IL. So what will be the maximum value? If you have calculated the minimum value of load resistance, then you can simply calculate the maximum value of load in current. That will be VZ divided by RL minimum. ठीक है, कितना आया, 10 divided by 250। बताओ कितना आया। 0.04. 0.04, Yes, sir. so that is 40 milliampere. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so
So that is 40 milliampere. IL max equal. Okay, now move on to the next step to find out the minimum value of load current. ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें डायोड को ऑन रखना है, तो वी विल रिप्लेस द डायोड विद ए बैटरी. बैटरी की पोलैरिटी हमारी इस तरीके से होगी. And its value is 10 volt. ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे IR, वैल्यू ऑफ IR. To find out the value of IR, you need VR. Now 50 volt is total applied voltage. 10 volt हमारा VRL के बराबर है, जो हमें मेंटेन भी करना है. ठीक है, so what will be the value of VR? बताइए. VR, Sir, 40. yes, VR will be simply equal to VI minus VRL भी लिख सकते हो आप, या फिर VI minus VZ भी लिख. ठीक है, so this comes out to be 40 volt. Now if VR is 40 volt, then what will be the value of IR? Sir, VR by R. Yes, IR will be simply equal to VR divided by R. So that will become 40 divided by 1000. ठीक है, तो ये कितना आया? Sir, इसका आंसर is 8 milliampere. नहीं, 40 डिवाइड बाय 1000 तो आपका 40 ही आया. 40 million. Sir, IL minimum. Yes, 0.04 ampere. yes, that's also correct. So this is the value of IR. Now IR is your 40 milliampere. Okay, now you have to calculate the value of IL minimum. You have already calculated IL max. You have to calculate the value of IL minimum. So IL minimum will be equal to this value, total value IR, the total current flowing through this branch, minus IZM. That means the maximum current flowing through the Zener diode. अगर इसमें इस ब्रांच से मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा है, तो ऑब्वियसली इस ब्रांच से मिनिमम करंट फ्लो करेगा. ठीक है, और इसमें से मैक्सिमम करंट फ्लो करने की वैल्यू दी हुई है आपकी 32 मिली एम्पियर. So it is simply equal to 40 minus 32, that is your 8 milliamp. Okay, now if you have calculated the value of minimum value of the current through the load resistance, then you can simply calculate the maximum value of load resistance. So RL max will be equal to V Z divided by IL
minimum. So this is equal to 10 divided by 8 million. सर आंसर कितना? 2250 ओम आ रहा है क्या? Answer is 2250 ओम. नहीं, it is 1.25. अगर हम 10 को 8 से डिवाइड करेंगे तो it is 1.25 किलो ओम. आपने शायद 2 से मल्टीप्लाई ज्यादा कर दिया. हाँ सर वो ठीक है. So now you have calculated the range of load resistance that this circuit can have. If your VI is fixed, your R is fixed, your specifications of Zener diode are fixed, तो उस केस में आपका जो लोड रेजिस्टेंस है वो फ्रॉम 250 ओम से लेके 1.25 किलो ओम तक वेरी कर सकता है. इससे ज्यादा हुआ तो भी आपका गड़बड़ हो जाएगी, इससे कम हुआ तो भी आपका डायोड जो है वो ऑफ रहेगा. Now I would like to tell you one observation in this, that your value of maximum load resistance is equal to your value of IR. Why is that so? The maximum current will flow through the load resistance if your Zener diode is off, if the current through the Zener diode is 0. And if current through the Zener diode is 0, then that means this is the same current that is this. Okay, so the maximum current flowing through the load resistance is also equal to the current flowing through the resistance. अब दोनों की जो वैल्यूज हम रखेंगे वो भी आपको उसी हिसाब से आती है. ठीक है, इसमें हम सिंपली 10/250 करते हैं, तो इसमें हम रिमेनिंग वोल्टेज डिवाइड बाई 1000 करते हैं, तो इनका रिलेशन इसी तरीके से ये आपके दोनों सेम ही आएंगे. बाकी चीजें आपकी सही हैं. ठीक है, तो एनी डाउट इन दिस? वी ऑल्सो हैव टू कैलकुलेट द मैक्सिमम वोल्टेज रेटिंग ऑफ द डायोड. तो बताइए इसके लिए क्या करेंगे? It is asking for TZM. सर into IZ. It is asking for maximum, so T max. It is simply equal to I ZM. max into V. Yes, into VZ. तो ये आपका कितना बन जाएगा? 32 मिलीवोल्ट, 320 मिलीवोल्ट. ठीक है. Now we will draw a simple graph ताकि हमें थोड़ी और चीजें अच्छे से समझ में आए. What we will do, we will draw a graph between voltage and current through the load resistance. So on this axis we are having the value of RL. Here we are having R, and here we are having VL. Okay, so I'm going to mark here two values.
Now this is the value of minimum load resistance. So what was minimum load resistance? 250 ohm. And what is the value of maximum load resistance? 1.25 K. So I will write is 1250 ohm. Okay. Now, if the value of load resistance in this particular range, then what is the output across the load resistance? Tell me. Try to think that if the range of load resistance is this particular range, इस range में आपकी load resistance की value चाहे कुछ भी हो, what should be the output across the load resistance? That is VRL right here. Yes, anyone? Okay. चलो पहले ये बताइए, if we are having the load resistance values in this range, then your Zener diode is on or off? On. On. And if your Zener diode is on, then you can simply replace it with a battery. Which is equal to 10 volt. And this 10 volt will be appearing across the load resistance, no matter how much current flows through it. Okay, now this is also given in the question also, problem also, that you have to maintain the VRL at 10 volts. So within this particular range, as you will increase the load resistance, the amount of current flowing through that will keep on changing, and it will change in such a way that the resultant of IL and RL will establish a constant voltage at the load resistance, and that will be equal to 10 volts. So within this particular range, the voltage across the load resistance will be 10 volts. उसके पहले और उसके बाद में हमें नहीं देखना, we have to do this for this particular numerical. उससे पहले आपको इनपुट को फॉलो करेगा, ठीक है, उसके बाद में जो वो कुछ और हो जाएगा. But what we are interested in this particular range. So this will be maintained at 10 volts. This is equal to here 10 volts. Because that's why we were doing this using the Zener diode to regulate the voltage across the load resistance. We are using different kind of appliances in the home, और एक सिंपल आप डिवाइस भी यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, तो उसके टेम्परेचर के हिसाब से, उसकी फंक्शनिंग के हिसाब से, how much longer we are using it. So depending upon that, current flowing through that load resistance, that device keeps on changing. But we do not want to, change the voltage across that device. We want to keep that within the specifications of the device. That's why we use the Zener voltage right here. अगर इस डिवाइस की जो कैपेबिलिटी है वो आपके 60 वोल्ट को विथस्टैंड करने की नहीं है, या मोर देन 10 वोल्ट को विथस्टैंड करने की नहीं है, बट योर इनपुट सप्लाई इज 50 वोल्ट, so we will use this circuit, and this circuit will never allow to experience this load resistance any voltage greater than 10 volt. जैसे ही वो यहाँ पे 10 ज्यादा होते ही ये मेंटेन करेगा, ये जो एक्स्ट्रा करंट होगा, इट विल कीप दैट करंट टू फ्लो थ्रू इटसेल्फ. जो एक्स्ट्रा करंट होगा वो यहाँ से फ्लो करता रहेगा. इनपुट वोल्टेज को चेंज करो या इसका लोड रेजिस्टेंस को फ्लक्चुएट करते रहो, तो जो करंट में चेंज आएगा वो ज्यादा आपका इधर होता रहेगा. इसकी तरफ से जो मेंटेन्ड वोल्टेज रहेगी वो 10 वोल्ट रहेगी. ठीक है, सो दिस इज द ग्राफ बिटवीन RL एंड VL, and similar to that we will also draw a graph between IL and VL. So what we will have here is IL, and here we will have VL. Now same thing, we will have two range here also. So this is the minimum value of load resistance. So this will give us maximum value of current through the load, which we have already calculated here, 40 milliampere. So this is
40 milliampere. And the minimum value of load current will be given by maximum value of load resistance 1250. So at that time, the minimum current was 0.08 milliampere or 8 milliampere. Okay. Now, what should be the value of load resistance voltage across this? This will also be your 10 volt. Okay. So now you can relate. If you will increase the load resistance, the current flowing through that will decrease. अगर आपका करंट इंक्रीज करेगा तो आपका जो वोल्टेज है वो उसी रेस्पेक्ट में डिक्रीज करता रहेगा टू मेंटेन ए कांस्टेंट वोल्टेज ऑफ 10 वोल्ट. आपने अगर मिनिमम लोड रेजिस्टेंस रखा तो मैक्सिमम करंट विल फ्लो थ्रू. आपने अगर मैक्सिमम लोड रेजिस्टेंस रखा तो मिनिमम करंट विल फ्लो थ्रू. इन बिटवीन अगर आप कोई रखोगे तो उसी के हिसाब से फिर यहाँ पे भी आपका लोड रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा. बट द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू that will remain constant, that is 10 volt. Anyone, any doubt? No, sir. Okay. So I think these type of numericals you will solve in this particular applications of Zener diode. The steps are simple, and if you will go step by step, then you will have no confusion. First, calculating the RL minimum, simply dividing VZ with the value of simply calculating the rearranging the variables in this equation. Okay. Now dividing simply VZ by minimum value of load resistance, calculate maximum value. Now calculate voltage drop across resistor. Then current through the resistor. Subtract the maximum value of Zener diode current given in the specification sheet from the resistance and calculate minimum value of load resistance. Sometimes instead of IZM, what you are given is PZ. So you can calculate IZM from PZ also. Then simply divide VZ by minimum value of current, you will get maximum value of load resistance. And multiplying the current and voltage, you can calculate the voltage rating of the Zener diode. Steps आपके यही रहेंगे. सबसे पहले अगर आप यही कैलकुलेट नहीं करेंगे तो आपके बाकी के स्टेप्स जो हैं वो नहीं आएंगे. ठीक है. So if you guys don't have any doubt, then I'm ending this meeting today. आपको कोई कुछ पूछना है, पहले से कोई टॉपिक पूछना हो, अभी हमारे पास 5-7 मिनट और हैं. सर. यस सर, हम अभी सारे उसमें जो हमने कैलकुलेट करा, हम नेगेटिव वो देख रिवर्स बायसिंग में देख रहे हैं ना. हमने एसी लगाया तो फॉरवर्ड आएगा, तभी करंट ज़ीनर डायोड के थ्रू फ्लो कर जाएगा. Zener diode Positive will work cycle में. only. Zener diode will work only if it is reverse bias. नो सर, अगर वो फॉरवर्ड बायस हो गया somehow, then Yes, sir. it will be simply act as a normal diode. वो कंडक्ट कर देगा फॉरवर्ड बायस में. ओके तो सर. फॉरवर्ड बायस में आपका सिंपली जो यहाँ पे ये हमने बैटरी लगाई है, ये आपकी वो 0.7 वोल्ट वाली बैटरी से इसको रिप्लेस कर पाओगे आप. या अगर आइडियल Zener डायोड लेंगे तो उसको आप सिंपली शॉर्ट कर दोगे. तो नो करंट विल फ्लो थ्रू दी लोड रेजिस्टेंस. ओके सर. अगर हम यहाँ पे -50 कर देंगे ना तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा. तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, 0 वोल्ट मिलेगा, क्योंकि नो करंट विल फ्लो थ्रू दिस. ऑल द करंट विल फ्लो थ्रू दिस ब्रांच. तो हम Zener डायोड का एप्लीकेशन करते ही इसी तरीके से हैं कि इट इज रिवर्स बायस. अगर आप एसी सिग्नल भी यूज कर रहे हो इनपुट पे, तो हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल सप्लाई इस तरीके से अलग से उसमें डीसी लगा के रखेंगे, दैट इट विल ऑलवेज कीप द Zener डायोड इन रिवर्स बायस. ओके सर. ओके.
ठीक है. Now please try to solve the numericals that are given in your textbook. First, to go through all the examples, you will have a better understanding, and then try to solve the unsolved problem. आपको किसी में कोई भी डाउट आता है, you can contact me on WhatsApp, or you can also write questions on the LMS. ठीक है. I will try to explain those things there. आप पर्सनली पूछना चाहते हो तो वो भी पूछ सकते हो. Okay, and I have uploaded almost all the videos on the YouTube. You can visit that any video, and you will find more, rest of the videos like right there. सर यूट्यूब विद चैनल आपको मैं एक लिंक जो है वो अभी भेजता हूँ इसमें. सर वो सुधांशु त्यागी वाला चैनल है. हाँ, वो देख, अगर आपको, आई विल रिकमेंड टू गो फॉर दोज वीडियोस, क्योंकि इसमें तो हमारी पूरी डिस्कशन जो है ना क्लास की, वो भी साथ में ही आएगी. दिस इज नॉट द ई कंटेंट, दिस इज जस्ट द रिकॉर्डिंग ऑफ द लेक्चर. ठीक है. बट वो जो चैनल्स वीडियोस बनाए गए हैं, दैट वर क्रिएटेड ड्यूरिंग दिस समर हॉलीडेज, एंड दैट इज द प्रॉपर ई कंटेंट. तो उसमें आपको, मतलब आपकी कन्वर्सेशन ऑब्वियसली नहीं होगी, उसमें जो जो सर ने डिस्कस किया है वही है. तो आपको अब एक ही 50 मिनट्स के लेक्चर में काफी सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा. मैंने अभी एक यूट्यूब का लिंक अभी पेस्ट किया है. आप इस पे क्लिक करोगे, देन यू विल डायरेक्टली गो टू द वीडियो, और उसी के साथ में ही आप उसी चैनल के ऊपर बाकी चीजें भी देख सकते हो. ओके, ठीक है. सो नाउ आई एम एंडिंग दिस मीटिंग. ओके. Thank you. Thank you, Okay. sir.